Welcome to the Invisible India podcast. I'm Jessica. And I'm Abhishek. We are a cross-cultural couple doing life in India, exploring the lesser-known mysteries of Indian culture, Interviewing fascinating figures who have chartered new territories, and sharing life as we raise our multicultural family amongst the complexities of modern Indian life. Hey everybody, welcome to the Invisible India podcast. Jessica here today. Before we get into today's special episode, I wanted to, as usual, update you on what's going on here and share a question from a listener. If you haven't checked out our last episode with the two idiots travel, please check it out. If you're like us, travel a lot, it was super, super helpful. You may have noticed that we did not release any episodes in January, and that was intentional. We wanted to take some time off. We were doing some traveling. We had a bunch of work stuff going on. The holidays were super insane busy. And when I say holidays, I mean Indian holidays in September, October, November, and Christmas is kind of a global holiday. It's not just a Western holiday. We were able to decompress quite a bit in January, and we're so thankful for that. So thank you guys for continuing to listen, and we are back in full force here in 2020. One of the things I love about doing this podcast is the interactions with different people who have similarities or have commonalities. I have just met so many cool people through this podcast. We've just been really blessed to connect with some fantastic people. Many of you have written into us or messaged us on social media, have left reviews, and just let us know your feedback, which has been super helpful. And some of the things that I love the most are answering questions or thinking about different suggestions that you bring up. So today I'm going to talk through something from Dana in Dehradun. So Dana says, I would love to hear you talk more about what your experiences were when you were invited into certain aspects of Indian culture. And she's talking to me, Jessica, as a white American person. As you mentioned, Indians are very invitational people. I'd love to hear more of your examples of how you navigate saying no to invitations that would just further the stereotypes and privileges of white people. Can you think of times you have declined an invitation to do something within Indian culture that you think would not have been beneficial for Indian people? First of all, I just want to say thanks, Dana, for being woke, and thanks, Dana, for diving into the difficulties of white privilege and the power dynamics of being an American, which is like, one of the most powerful countries in the world, living in India, interacting with people, and representing a culture, even if I don't want to necessarily always be representing everything about American culture, that's just kind of what it is. First of all, I just want to dive into the assumptions behind your question. The first assumption is that Indian people are very invitational. Indian people are going to invite foreigners to be a part of things, to enjoy different festivals, enjoy different aspects of Indian culture. Try the food, try the dance, wear the sari, get mehendi, come to our house. People are so open and really want other people to experience their culture. And that's incredible. And that's one of my favorite things about living here is that Indian people are so open. But I think that we have to be really careful if we come from a place or if we represent a culture where there are different power dynamics at stake. It can be very easy to take the place of a deserving Indian person in a job or in a musical contest, anything really. Just because you're a foreigner, sometimes people want to elevate you into the spotlight for different things that you don't actually deserve. So this does happen a lot, and I think in my early years I wasn't as aware, and I just kind of let it happen. If there's anything where there's like a contest or something that has limited resources, then I think that we have to be really careful as foreigners not to step into a place where we're going to just overpower the situation. So I'll give you a little example from recent history. At our son's school, there was a little dance competition for the mothers.
I did participate in that. And I wondered, I thought about it ahead of time of, should I really be doing this? I mean, this is fun. Everyone's sharing different cultural dances. And so everyone showed up and they did different cultural dances. Some people from South India, some people did like Gujarati, some people from Assam, people from Orissa. It was really cool to enjoy. But I went and I did a dance as well. Whether or not it was actually that great, I won the little prize because people were like, oh, you came so far from a different country and you've learned about our culture and you've learned how to do this stuff. Yeah, I am married to an Indian. Yeah, I've learned how to do Indian dance. Yeah, it's kind of part and parcel of being here, but I felt really bad. And that was notably a mistake that I made, that I should have known better, that they were probably just going to give me the prize because I'm a white person. And yeah, I had more barriers to overcome to learn this stuff, but there were plenty of other ladies there that did an amazing job, and they probably were more deserving to win the prize than me. So that's one example. Other things I would say, I've stopped doing a lot of like classical singing competitions or like shows or performances because, again, it's like too much undue attention. Yeah, I think that if it's not a competition or if there are not other like prizes being given out and if it's not a limited resource, then I think participating as a foreigner is fine. I think we have to be really careful not to take the spot of a well-deserving Indian person who is trying to represent their talents and express something unique or their perspective on their culture. So I guess that would be my 2 cents from my experiences of, I guess, almost like 14 years now being in and out and living in and living out and living among Indian people. That piece of advice that I try to think about for myself is, am I taking away someone else's opportunity by going to a wedding and wearing a sari? No, I'm not taking away anyone else's opportunity. I'm showing my appreciation for the culture and honoring my husband's family and traditions. By going on the radio and sharing my love story, which is what we're going to get into later in the episode, am I taking away someone's opportunity? No, not really. There are plenty of love stories out there. Everyone can share their thing. If there's some kind of scarcity, or if there's some kind of limitation, and if you're actually taking away an opportunity from someone else and you have an unfair advantage because people love foreigners and love to put foreigners in the spotlight, then I would say, yeah, it's probably better to decline. Like, there was my mistake. You can learn from my mistakes. Awesome question. Keep sending us these kind of things. This is super fascinating to hear what questions people have. Yeah, comment on social media, write to us, email us. We love it. So today's episode is a special salute to love. I was recently asked by the folks at Red FM 93.5 in Patna to come and share our love story on Valentine's Day on the radio. So it was a super fun interview. You can hear my conversation with RJ Visha, who is one of the top RJs in the state of Bihar, and I hope that you just love listening to her as much as I had fun talking with her. So, here it is. हाँ जी, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप है शहर की सबसे बड़ी वेली विशा के साथ ओनली ऑन वेलापंथी.com। तो हम लोग सिंगल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सारे लोग सिंगल हो रखे हैं, लेकिन यार फिर भी लव स्टोरी सुनने में ना हर किसी को इंटरेस्ट आता है, चाहे वो एक सिंगल आदमी हो, चाहे कमिटेड हो, चाहे कुछ भी हो रखा, ब्रेकअप हुआ हो ताजा ताजा, तब भी वो लोग लव स्टोरी सुनने में एनी डे इंटरेस्टेड रहते हैं। और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि अपनी लव स्टोरी लेके आई हैं, एंड हर नेम इज जेसिका। पहले तो भाड़े की जनता की तालियों के साथ आपका स्वागत होएगा। हाय जेसिका। हाय विशा, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी आपको हिंदी सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार शानदार आवाज, शानदार हिंदी, बट लेट मी टेल यू, दिस वुमन जेसिका इज नॉट फ्रॉम इंडिया, शी इज फ्रॉम शिकागो। बाकी कहानी आप बताइए, आप कैसे मतलब शिकागो से पटना आ गई और मतलब एकदम ही गर्दा मचाई हुई है। हाउ डिड दिस हैपन, पटना हैपन?
पहले मैं इंडिया आई थी लगभग 13-14 साल पहले, पहली बार। और 2006 में आई थी, और उस टाइम मैं काम करने थी इंटर्नशिप के लिए आईटी में। और मुझे कभी लगा नहीं था कि इतने साल इंडिया में रहूंगी, इतने साल इतने गहरे तरीके में इंडिया के बारे में जाने, और इतना प्यार होगा इंडिया से और लोगों से भी। बिल्कुल। तो इंडिया तो आ गई, लेकिन इनका सफर इंडिया में आकर के उस टाइम पे खत्म नहीं हुआ। ये बढ़ता गया। ये क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी थोड़ी देर में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून टू 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हो जा वेला, 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 velapandi.com पे रेड एफएम, velapandi.com। हाँ जी, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप इस शहर की सबसे बड़ी वेली विशा के साथ, ओनली ऑन velapandi.com। तो अपन बात कर रहे थे जेसिका से, जो कि हैं शिकागो से, बट शी हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर हाउ लॉन्ग जेसिका? नाउ 4 years, बट उससे पहले मैं हरिद्वार में थी लगभग 4। सो बेसिकली ओके, तो इंडिया में आपको रहते हुए लगभग कितने साल हो गए? लगातार तो 4 साल हो गया, फिर 4 साल और। ओके, सो बेसिकली यू हैव बीन इन इंडिया फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम। नाउ अब मैं जेसिका से आपको बता दूं, सबसे पहले मैं मिली थी पूजा ऑन व्हील्स में। हम इनके अपार्टमेंट में गए थे, एंड देयर आई मेट हर, एंड नाउ शी इज हियर। बट आई वॉन्ट टू नो कि मैं तो आपसे ऐसे मिली पूजा ऑन व्हील्स में, पर आप किससे मिल गई जो आप इतने लंबे टाइम तक इंडिया में रह गई? हाँ, पहले इंडिया से प्यार हो गया, फिर एक बिहारी से प्यार हो गया। आई लव दैट। ओके, सो क्या रही आपकी कहानी? हाँ, तो फिर एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभिषेक, वो बिहारी है, यहाँ से हैं। और फिर वो अमेरिका गई थे पढ़ाई के लिए, तो अपना मास्टर्स के लिए अमेरिका में थे कुछ 10 साल। और फिर मैं इंडिया में रही पहले लगभग 4 साल। लेकिन फिर वो उधर थे और मैं इधर थी, और हम लोगों के एक दोस्त ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये लड़की है, ये वो लड़का है, एकदम उल्टा जगह पे है, एक दूसरे की जगह पे रह रहे हैं। सो वी हैड मेट इन यूएस फेस टू फेस, लेकिन उससे पहले फेसबुक में बात होता था, चैटिंग चल रही थी। फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरे से मिले, और पता चला कि हमारे बीच में बहुत सारे कॉमन फ्रेंड थे। ओके। और हम लोग जानते नहीं थे कि फ्रेंड सर्कल एक ही था। तो फिर दोस्ती हो गई, फिर धीरे धीरे प्यार हो गए, फिर शादी हो गई। क्या बात है, शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए। इनके बच्चे भी बहुत क्यूट है बाय द वे। 2 बच्चे हैं। अब और चीजों के बारे में जानेंगे जेसिका से, जो कि थोड़ी सी मतलब ऐसी, तो ये तो लव स्टोरी हो गई इनकी, बट इंडिया में आना ऑल द वे फ्रॉम शिकागो एंड टू मास्टर द लैंग्वेज हिंदी और एंड व्हाट नॉट। इन्होंने बताया अभी बहुत कुछ मेरे को अपने टैलेंट के बारे में, जो कि मैं आगे आपको बताती हूँ, और ऑफ कोर्स जेसिका भी बताएंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून टू 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हो जा वेला, 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 velapandi.com पे रेड एफएम, velapandi.com। हाँ जी, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप इस शहर की सबसे बड़ी वेली विशा के साथ, ओनली ऑन velapandi.com। और हमारे साथ है जेसिका, जो कि है शिकागो से, एंड शी हैज बीन लिविंग इन पटना बिकॉज शी फेल इन लव विद अ बिहारी गाय, एज शी सेड। उनको एकदम प्यार हो गया, एंड देन दे आर हैप्पीली मैरिड, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बट आप इंडिया में, आप बता रहे हो इट्स बीन 8 years आई गेस since you are in Patna. पटना में 4 साल। हाँ, and in India altogether you have been living since last 8 years. So मेरा सवाल ये है कि आप all the way from Chicago आए, you came from Chicago to a place in India, that to Haridwar. You were in Haridwar, right? What were the difficulties that you faced? Because let's face it, India and Chicago, 2 different, totally, altogether different in all aspects, culture, food habits, language. So what were the difficulties that you faced in the first go? I think पहली बात है कि ये हिंदी सीखना इतना आसान नहीं है, और इतना नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ लोग इतने इंग्लिश में बात करते हैं कि वो लोग आपके साथ हिंदी में बात करना ही नहीं चाहते हैं। सब लोग इंग्लिश में ही बात करना चाहते हैं। तो सीख भी नहीं पाएंगे आप। सीख भी नहीं पाएंगे, तो बहुत परसिस्टेंस डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही मतलब मेहनत करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज था। और फिर दूसरी बात है, अगर मैं सच बताती हूँ तो मैं सरप्राइज हो गई थी कि वहाँ पे स्पेशली हरिद्वार में और उस साइड लोग sometimes people are not behaving very nicely with women. So लोग वहाँ पे और पूरी इंडिया में मैंने नोटिस किया कि लोग लेडीज को दबाने की कोशिश करते हैं और हरासमेंट भी होता है। लेकिन एक्चुअली पटना में
ये मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा कम हरासमेंट होते हैं। यूजुअली लोग बहुत अच्छा से बिहेव करते हैं लेडीज़ के साथ, जैसे मेरी एक्सपीरियंस है। और लोग बहुत इज्जत देते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुली से बात करते हैं यहाँ पे, मैंने नोटिस किया। क्या बात है। सो बेसिकली Patna was better altogether when it comes to experience. I feel that, but it might be not everyone's experience, but I feel that यहाँ मेरा अच्छा अनुभव हो रहा है। क्या बात है, बहुत शानदार। और अब आएंगे सबसे क्रूशियल मुद्दे पे, जो कि है मम्मी पापा से रिलेटेड। सो वी वुड टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, वी विल इन फैक्ट टॉक अबाउट दैट, बट पहले आप सुपर हिट्स पे कान लगाओ। आई नो आप काफी इंट्रीग्ड हो कि जल्दी जल्दी सुनाओ ना यार, बट पहले सुपर हिट्स, ब्रेक लेंगे एक छोटा सा, फिर आते हैं, बात चालू करते हैं, इनफैक्ट कंटिन्यू करते हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हो जावेला हो जावेला हो जावेला हो जावेला हो जावेला हो जावेला वेलापंती.com पे रेड एफएम वेलापंती.com। हाँ जी, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप है शहर की सबसे बड़ी वेली विशा के साथ, ओनली ऑन वेलापंती.com। और इस वक्त हमारे साथ है जेसिका, जो शिकागो से हैं, बट शी हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस लास्ट 4 years बिकॉज ऑफ कोर्स इनकी शादी एक बिहारी से हुई, दैट टू इट्स अ लव मैरिज। सो आई हैव बीन आस्किंग हर कि कैसा रहा जर्नी, क्या रहा, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज इनके 2 बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे। मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, एंड देन आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू कोप अप द इंडियन कल्चर, द लैंग्वेज मे बी एंड व्हाट नॉट। तो ये सारी चीज़ों पे हमने बात की। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और वो है पिताजी और माताजी। तो ऑफ कोर्स आप गए होगे, कन्फ्रंट किया होगा अपने पेरेंट्स से कि यस देयर इज अ गाय आई लाइक, और उन्होंने भी किया होगा, जीजा जी ने हमारे, कि हाँ भाई आई लाइक अ गर्ल, and she's not from India, or maybe in your case he's not from US and Chicago, whatever. So how difficult or easy was it for you to convince your parents and for him as well? मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, वहाँ पे बहुत इंडियन लोग हैं, बहुत हर कंट्री के लोग रहते हैं अमेरिका में। तो वो लोग बोले ठीक है, तुम ऑलरेडी इंडिया से प्यार हो गए, अब इंडियन से प्यार हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका सॉर्टेड था, नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई बिल्कुल नहीं, इट वाज गुड टू गो। भी नहीं। वाज देयर एनी डिफिकल्टी फ्रॉम हिज साइड? हाँ, आई थिंक वो मम्मी पापा ने कभी सोचा नहीं कि विदेशी से हमारा बेटा शादी करेगा। हाँ। लेकिन वो लोग जानते थे कि वो अपना लाइफ जीना चाहते हैं। सो एक्चुअली वो लोग मुझसे बात करने के बाद और मिलने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मेरे पापा भी आए थे यहाँ पटना में बात करने के लिए। तो थोड़ा सा लव टू अरेंज हो गया। और हाँ, मेरे पापा जी मम्मी जी बहुत ट्रेडिशनल है, लेकिन ब्रॉड माइंडेड भी बहुत है और समझदार भी बहुत है। तो मेरा इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैंने एडजस्ट किया, मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की उनके साथ, और उन लोगों ने भी मेरे साथ बहुत एडजस्ट किया। तो ऐसे नहीं कि तुमको इधर रहना है, ऐसे करना है जैसे हम लोग करते हैं। वो लोग मुझे बहुत फ्रीडम देते हैं। और शुरुआत में जैसे बहू बनने के बाद मैंने टिपिकल बहुत सारे कुछ किया, जैसे सब फैमिली से मिले, सब in that proper attire, Indian attire, हाँ, साड़ी वाड़ी पहन के, सिंदूर लगा के। I still see you wearing चूड़ी and do you like these things personally? I do. You know, श्रृंगार जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, we call it श्रृंगार। So one last question that I have, जो कि मैं थोड़ी देर में आके पूछूंगी, आप तब तक सुपर हिट्स पे कान लगा लो, तब तक मैं इनको बताती हूँ कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। आपके पास वापस आते हैं लौट के। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हो जावेला हो जावेला हो जावेला हो जावेला हो जावेला हो जावेला वेलापंती.com पे रेड एफएम वेलापंती.com। हाँ जी, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप है शहर की सबसे बड़ी वेली विशा के साथ, ओनली ऑन वेलापंती.com। इस वक्त हमारे साथ हैं जेसिका, जो कि है शिकागो से, बट शी इज बीन लिविंग इन पटना बिकॉज ऑफ कोर्स इनको एक बिहारी लड़के से प्यार हुआ, एंड देन उनकी लव स्टोरी चालू हुई। एंड आई थॉट कि इस वैलेंटाइंस डे व्हाई नॉट, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड दे रादर हैव 2 लिटिल किड्स, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने स्टोरी मिस कर दी है तो आपको रेड एफएम इंडिया के ऐप पे सुनने के लिए मिल जाएगा, definitely जाना। So Jessica, you must be having a lot of free time when kids are not here, they're off to school. So what do you do exactly in the free time, or maybe if you're working somewhere? हाँ,
What do you do? मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करती हूँ NGO वाले काम में, और वो सोशल वर्क में हैं, और जैसे विलेज में जाते हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं. और बाकी मैं मीडिया में हूँ, मैं पॉडकास्ट चलाती हूँ. ओके. और उसका नाम है इनविजिबल इंडिया. तो हम लोग उसमें बात करते हैं इंडिया के बारे में, और जैसे लोग दूसरे कंट्रीज से सुनते हैं और इंडिया से भी सुनते हैं. जैसे हम लोगों के पर्सपेक्टिव से, जैसे अमेरिका से आए हूँ और मेरे हस्बैंड रिटर्निंग NRI है, तो वो इंडिया के बाहर 10 साल रहे और फिर वापस आए. सो उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा यहाँ, और तो हम लोग बताते हैं कि अननोन चीज़ें इंडिया के बारे में. तो उसका नाम इनविजिबल इंडिया है, और वो आपको मिल जाएगा जियो सावन पर अवेलेबल है, iTunes, Spotify, और हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं. हम लोग फोटोज पोस्ट करते हैं अबाउट माई एक्सपीरियंस एज एन अमेरिकन इन इंडिया, एंड ऑल्सो लाइक सम ऑफ द इम्पोर्टेंट issues going on. Okay. And we interview different people and get their perspective. क्या बात है, क्या बात. भाड़े की जनता किधर हो यार, तालियां बजाओ. That's my भाड़े की जनता. आज वैलेंटाइंस पे भी इनको यहीं जमा के रखा हुआ है मैंने, because they don't have a life just like me. So yes, it was very nice talking with you, Jessica. Thank you so much for coming to the studio and sharing your love story. Thank you. बहुत Visha. लोग वहां पे जल चुके होंगे ये कहानी सुन के कि यार हमारे ही कुछ नहीं हो पा रहा, बाकी सब शादी कर ले रहे हैं. So yes, don't worry guys, आपको मेहनत करनी चाहिए ऐसी. अगर आपको लव स्टोरी बनानी है तो कुछ मेहनत करो, जीवन में कुछ करो. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप अपनी ब्लेसिंग्स दे दें हमें, ताकि हमारा भी जीवन में कुछ हो जाए. आई ऑल्सो make my way through this particular thing called Valentine's Day. God bless you. That's Thank it. you, Visha. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. बजाते रहो. गले में लग गले मिल रही यार. चलो यार, तुम लोग गाने सुनो और बजाते रहो. So there you have it. I hope that you enjoyed that English interview. I really had a lot of fun. Check out Visha's show Velapanti on the Red FM radio app, 93.5 in Patna. Thank you so much for listening to this episode.